watching 6 p.m. Prime. I'm Nabila Jamal. Our top focus this hour, Seema Haider, the Pakistani citizen, appeals for mercy. She reaches out to President Murmu saying she's being treated like a terrorist and wants to be pardoned. After nearly 36 hours of grilling her, the ATS has let her off. She's now returned to her house in Noida. But really, what's the truth behind her story? Let me take you through all of those details. The headlines first. 4 accused arrested in Manipur sexual assault horror, remanded to 11-day police custody. House of main accused set ablaze. Chief Minister Biren Singh evades the question on his resignation. India Today grilled NCW chief over inaction in complaints filed in June over Manipur sexual assault horror. Rekha Sharma caught suffering and stuttering while being asked questions about why there was an absolute delay in action. आप मणिपुर नहीं जा सकते थे, आपका डेलीगेशन नागालैंड तो जा सकता था. See, whatever I had to say, I've said. I'm sorry, whatever I had to say, we have said. Yeah, I've given my statement. A big win for Hindu side in Gyamvapi case. Varanasi court allows ASI's scientific survey at the mosque complex. Bazukhana exempted. Rahul's defamation case in the top court. Supreme Court issues notice to complainant Puresh Modi as well as the Gujarat government. The next hearing on Rahul Gandhi's petition on the 4th of August. And death toll mounts in Raigad landslide. 21 bodies recovered so far. Search and rescue operations currently underway. Pawan Kalyan versus Jagan Mohan Reddy in Andhra Pradesh. After Kalyan's human trafficking charge, Jagan claims Pawan has illicit relationship. All right, let me cut to the big breaking here. It appears that almost 36 hours of questioning later, now you have Seema Haider, the Pakistani citizen, finally returning to Noida. All right, let me cut across to this breaking on Manipur. All accused in the Manipur case have been, at least 4 accused, have been remanded to 11-day police custody, say the Manipur police in a viral video case. 4 of the accused who've been arrested now sent to 11-day police custody. Let me quickly cut across to Arvind Oja joining us live on this. Arvind, Manipur ke case. As the police now cracking down on the perpetrators, 4 of them have been arrested. The 4 accused remanded to 11-day police custody. The Manipur police now were cracking the viral video case where 2 girls were stripped, gang raped and paraded naked. Manipur police now investigating the case have arrested 4 people, 4 of them sent to 11-day police custody. The latest coming in on the Manipur horror. All 4 accused remanded to 11-day police custody. Manipur police, who's investigating the case almost 77 days after the incident has taken place. 4th of May was when the Ghori Act took place, and at least 2.5 months later, after that video went viral, finally the police waking up to act. Here's the big update on the Manipur case, as 4 of the accused who've been arrested sent to 11-day police custody. I am being treated like a terrorist. After 36 hours of grilling by UP anti-terror squad, Pakistani citizen Seema Haider appeals to President Murmu, begs for pardon and Indian citizenship. India Today digs deep into Seema Haider's claims.
All right, now coming back to the Seema Haider story, we at India Today have dug deep into the claims that Seema Haider has made, and in the latest we have some photographs that we've accessed showing Seema Haider's wedding with Sachin indeed. Another photo of Seema Haider and Sachin's wedding has now emerged. Seema Haider touching Sachin's feet in that picture. Seema and Sachin have also put their wedding photograph as evidence as part of the petition that they filed with President Draupadi Murmu. Seema's petition, mercy petition, says that she is being treated like a terrorist. She has done everything for her love, changed her religion from Islam to Hinduism, is now seeking to be pardoned. This is the big news here. Seema Haider now pushing for pardon. She wants to be exempted from this kind of interrogation. She says she's being treated like a terrorist, and as part of a petition to President Draupadi Murmu, she has put this very photograph where she's seen on one end she's put a TikTok video where Sachin is putting sindoor on Seema. On the other, a photograph that India Today has accessed showing Seema as well as Sachin, both of them after their marriage, in a photograph with all her 4 kids. A black and white photograph, but it appears to be as recent as 2021. Let me cut across to Arvind Oja, who's been very closely tracking those developments there. Arvind, ये बताइए कि ये फोटोग्राफ है, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है और ये कब का है फोटोग्राफ, और क्या ये फोटोग्राफ इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले बताऊं कि इंडिया टुडे ने ये फोटोग्राफ एक्सेस किया है और सीमा ने ये जो फोटोग्राफ है, जो पिटीशन, मर्सी पिटीशन फाइल की है प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सामने, उसमें ये फोटोग्राफ अटैच किया है एज एविडेंस। उसने दरअसल सीमा हैदर ने ये बताने की कोशिश की है कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ उसने शादी की थी। सचिन एक भारतीय नागरिक है, ऐसे में अगर सीमा ने उससे शादी कर ली तो वो भी एक भारतीय नागरिक हुई, इसलिए प्रेसिडेंट के सामने याचिका लगाई है, पिटीशन लगाई है और अपने वकील के जरिए, और ये कहा है कि उसे भी भारतीय नागरिकता दी जाए, यानी इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड की है सीमा हैदर ने। सीमा हैदर ने पिटीशन में सब कुछ बताया है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान से नेपाल आई और नेपाल से इंडिया आई। 13 मार्च को उसने शादी की थी सचिन मीणा से। उसके एविडेंस के तौर पर बाकायदा अगर आप देखें तो उसका पैर छूते हुए सीमा का सचिन का वो फोटोग्राफ भी है। साथ ही साथ एक फोटोग्राफ में जो सचिन है सीमा है और सीमा के साथ उसके 4 बच्चे हैं। तो ये फोटोग्राफ भी पिटीशन के साथ अटैच करके प्रेसिडेंट को दी गई है और सीमा हैदर की तरफ से उसके वकील ने पिटीशन फाइल की है और इस पिटीशन में सीमा हैदर ने कहा है कि वो अब हिंदू रीति रिवाज से सचिन से शादी कर चुकी है, इस्लाम जो रिलीजन है वो छोड़ चुकी है, उसके हस्बैंड से उसका पहले ही तलाक हो चुका था। तो ऐसे में वो इंडिया आ गई है और सचिन से शादी कर चुकी है, इसलिए उसे इंडियन सिटीजनशिप दी जाए। जी अरविंद, यहाँ पर 36 आवर्स एटीएस ने सीमा को ग्रिल किया है और सीमा अब बोल रही है कि ये टेररिस्ट के जैसे ट्रीट किया जा रहा है उसके साथ। मगर फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन करें? ये तो जैसे आई है इंडिया के अंदर बॉर्डर पार करके, ये एक सीजन टेररिस्ट ही कर सकता है। इतनी स्मूथ से आई है, पासपोर्ट लेके बना के डॉक्यूमेंट्स, फ्लुएंट हिंदी बात करती है, बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, एक इंडियन हिंदू लेडी के जैसे आई है अंदर। तो ये ट्रेनिंग दिया गया है या नहीं, इसके बारे में कुछ पता है? एटीएस ने कुछ बताया है इसके बैकग्राउंड के बारे में? नहीं, अभी तक इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी गई है या वो कोई पाकिस्तानी स्पाई है, इस तरह का अभी तक फिलहाल जब तक हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, तब तक कोई एविडेंस एजेंसीज के पास नहीं है। एटीएस ने भी 36 आवर तक सीमा हैदर से पूछताछ की थी और सीमा ने खुद इंडिया टुडे के दिए इंटरव्यू में ये बताया कि किस तरह से एटीएस ने उसको इंट्रोगेट किया। उसने सब कुछ जो सच था वो बता दिया। एटीएस के सोर्सेज का भी यही कहना है कि अभी तक उसके स्पाई होने का कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, जहां तक सीमा ये क्लेम कर रही है उसे टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया, तो बिल्कुल जैसे एक टेररिस्ट एंटर करते हैं उसी तरीके से उसने भी एंट्री की थी विदाउट एनी वीजा। वो इलीगल तरीके से उसने एंट्री की थी और इलीगल तरीके से एंट्री की, इस वजह से उसे अरेस्ट किया गया था
और 120B सेक्शन के तहत शेल्टर देने के आरोप में सचिन और सचिन के जो फादर है उनको भी अरेस्ट किया गया था। कोर्ट से बेल मिल गई थी, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान से जुड़ा मामला है और जिस तरीके से सीमा नेपाल के रास्ते में इंडिया में एंट्री की थी, ऐसे में एजेंसीज को ये राइट है कि एजेंसीज से उससे पूछताछ करे, उसे ग्रिल करे और 36 आवर तक जो उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड है उसने ग्रिल भी किया, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। सोर्सेज का कहना है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके आधार और जो सीमा ने बयान दिया है उसके आधार पर वो एनालाइज कर रहे हैं पूरा कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। लेकिन फिलहाल की डेट में सीमा कोई स्पाई है, इस तरह का कोई एविडेंस अभी तक कम से कम नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। All right, thank you very much, Arvind. Clearly, like Arvind Oja says, the suspicion is all the more here because Seema comes from a country, Pakistan. We know the kind of funding that Pakistan does to terrorist organization, backs terror against India. So it's all the more important to check the credentials of this lady. Even if she claims she's come in the name of love, she's entered the country illegally. She's now petitioned to the President, Draupadi Murmu, and India Today has accessed that very mercy petition where she says that she has left everything behind in Pakistan, has converted from Islam to Hinduism, has borne the brunt of triple talaq over the years, has struggled with her husband and has now left all behind only in the name of love. She also says she's open for a higher investigation either by the CBI or the NIA. An all-important and exclusive interview that Seema Haider has had with India Today's Anjana Om Kashyap. She's spoken along with her husband Sachin to India Today's Anjana. Let's have a quick listen at this very detailed conversation where she sticks to her ground, insists that she's done all of this only in the name of love. हमारे साथ इस वक्त सीमा हैदर खुद लाइव आज तक पर जुड़ रही हैं। उनके साथ सचिन भी मौजूद हैं। सीमा जी, आज तक पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सावन के महीने में चूड़ी, मेहंदी सब पहनकर आप बैठी हैं, तो सावन के महीने के बारे में जानती हैं क्या? मैम ज्यादा तो नहीं जानती, इतना जानती हूँ कांवड़ निकलता है और सब खुशी मनाते हैं, गंगा से मतलब पानी लेने जाते हैं, दे आते हैं। इतना ज्यादा नहीं जानती, थोड़ा बहुत जानती हूँ। मेहंदी भी लगाई है आपने? जी मैम, जी मैम मेहंदी भी लगाई है। सावन के महीने में लोग लगाते हैं भारत में। बहुत सारी मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, मेहंदी और चूड़ी बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल मैम। ये एटीएस ने आपसे कई घंटों की पूछताछ की है, क्या बताएंगे? एटीएस ने आपसे क्या पूछा और कौन सी ऐसी बात थी जिस पर उनको सबसे ज्यादा शक था? मैम शक तो उनको मुझ पे ही था, पूरा शक था। और मैंने जो भी सच था सब बताया मैम, शुरू से लेकर गांव से लेकर कराची तक, कराची से लेकर यहाँ तक की पूरी जिंदगी मैंने उनको सारी सच सच बता दी। आगे जो होगा पता पड़ जाएगी मैम। फिर उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या उन्होंने पूछा कि सब उनके आगे रखा? उन्होंने पूछा कि आपने इलीगली, मतलब आपने कानूनन नहीं बल्कि अपनी पहचान छिपाकर देश में एंट्री की है, इस पर आपने क्या जवाब दिया? मेरी मजबूरी थी, मुझे यहाँ आना था और इंडिया का वीजा मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि सचिन के बगैर वहाँ रहना मेरे लिए नामुमकिन था। पाकिस्तान मुझे छोड़ना था और इंडिया मुझे आना था, तो इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा मैम। आपकी उम्र 30 साल है? जी मैम। और सचिन की 22? मेरी जो शनाख्ती कार्ड में है ना। हाँ? जी मैम सुने, शनाख्ती कार्ड में मेरे पापा ने मेरी एज कुछ कम करवा के लिखवाई थी। इसका कोई इशू नहीं होता पाकिस्तान में, सबकी। मैं तो 6 साल कम लिखवाई, लोग तो 8-8 साल भी कम लिखवाते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। और रही बात जो बच्चों के कह रहे हैं, तो उनकी भी साल कम लिखवाई गई। ये सारी बातें मैंने शुरू से लेकर सबसे सच बताई कि भाई हकीकत में ये है और जो शनाख्ती कार्ड में ये है। इसका वहाँ पाकिस्तान में कोई मतलब नहीं होता कि आपने कम क्यों लिखवाई या ज्यादा क्यों लिखवाई। पर मैंने जो बात सच्ची थी मैंने उस सब के आगे रखी, दोनों तरीके। जो मैंने कागज में उम्र कुछ कम लिखवाई वो भी सच बताया कि भाई ये इसी कारण लिखवाया, और जो मेरी सच्ची उम्र 27 साल की हूँ मैं, वो मैंने सच्ची बताया। इसमें मैं झूठ कुछ भी नहीं कहा मैम। और लोग ये कह रहे हैं कि सीमा ने झूठ कह दिया, खुलासा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जो बातें ये आप कह रहे हो, खुलासा कर रहे हो, ये सबसे पहले मैंने बता रखी है, कानून को मैंने सारी सच्चाई बता रखी है। आप लोग खुलासा आप कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन की उम्र 22 है? जी मैम। 23 है मैम इनकी। 23 है।
23 में चल रहे हैं ये। 23 में चल रहे हैं जी मैम। अच्छा सीमा, ये बताइए आज तक ने भी पड़ताल की, कमरा नंबर 204 होटल विनायक, यहीं पे ठहरी थी ना आप नेपाल में? जी मैम। आप लोगों ने वहां पर अपना नाम क्यों बदल कर लिखवाया? आपने अपनी असल पहचान वहां पर क्यों नहीं बताई? मैम ये सरासर झूठ कह रहे हैं वो होटल वाले। हम ना उन्होंने हमसे नाम लिखवाया, ना वो सुबह सुबह हमसे 500 लेते थे डेली के नेपाली पैसे। वहां पे इतनी कोई शक्ति नहीं है, कोई इतना वो नहीं है। अब वो खुद को बचाने के लिए और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। पर उनके साथ मैं फैमिली की तरह रही हूँ, हम ऐसे रहे हैं जैसे फैमिली में थे। उनके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, जो होटल के मालिक थे, बहुत अच्छे इंसान है। वो बेटियों की तरह मुझे रखते थे। मेरी सच की थोड़ी ऊंच नीच में बात या तेज आवाज हो जाती थी ना, वो भाग के मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी से मत लड़ो। इस बात की भी वीडियो में टिकटॉक में है और जो इंस्टाग्राम में बिल्कुल फैमिली इनके बच्चे उठाती थी मैं। इनकी जो मम्मी थी, अपनी सास थी, वो आंटी, उनके साथ में हंस के हमारा बैठना खाना पीना इतना अच्छे से हम रहते थे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं। हाँ, उनको पता था मैं सीमा हूँ, सचिन ये है, सचिन है, सारा पता था। पता नहीं खुद को बचाने के लिए किस चीज के लिए झूठ कह रहे हैं। बाकी वो कभी भी उन्होंने नाम लिखवाने की बात ना करी। सुबह सुबह वो 500 लेते थे डेली का, मतलब 12 बजे से पहले 500 रुपये उनको देना था। ना वो लिखते थे ना कुछ और, वो मैं अपने हाथों से मैं सचिन अपने हाथों से देते थे। पानी की बोतल वहां से लेके वो पैसे दे देते थे। और ये पता नहीं अब क्यों कह रहे हैं, इसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। मगर मैं वही रही तो सही। वहां से सिर्फ पशुपति के नाथ के अलावा हम कहीं भी नहीं गए। कोई इसी हम बस इसी एरिया में घूमते थे। एक मेरी दोस्त थी सीता, इसी एरिया में उनका होटल है, वो खाना बनाती थी। उसके आलू के पराठे खाने के लिए मैं और ये जाते थे। मेरी बहनों की तरह थी, तो इनको जीजा जी बुलाती थी, सीता नाम की लड़की। तो वहां से घर रूम से वहां तक का सफर सिर्फ हमारा होता। सिर्फ पशुपति नाथ गए थे हम, इसके अलावा हम और कहीं भी नहीं गए थे। 7 दिन रहे आप वहां पर? 7 दिन? जी बिल्कुल मैम, 7 दिन रही मैं। मेरी 7 दिन की टिकट थी, बच्चे घर पे थे। आपने अपना नाम 7 दिन में मैं वापस चली गई थी। क्या आपने अपना नाम प्रीति लिखवाया था वहां पर? जी नहीं मैम, कभी भी नहीं। मैं प्रीति नाम आपके मुंह से सुन रही हूँ। मेरा नाम सीमा ही था, उनको पता भी था। वो अब खुद को मतलब उन्होंने हमारा नाम लिखा ही नहीं था, क्योंकि मुझसे पहले इन्होंने मेरा तो नाम लिखा ही नहीं था। मुझे तो रोका भी नहीं था कि तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने लिखवाया था कि मेरी पत्नी भी आएगी, हमें रूम चाहिए। जी मैम। अच्छा ये बताइए कि होटल विनायक के जो मैनेजर हैं, उनका कहना है कि आप पब और बार में वहां जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने समझाया कि वहां पर इंडियंस को बड़ा लूटा जाता है, वहां पर जाना अच्छा नहीं होगा। कभी भी नहीं, हमने बात ही नहीं करी थी कभी जाने की। और मेरे छोटे बच्चे घर पे थे तो मैं ऐसा कर, क्योंकि हम पे सिर्फ 7 दिन थे। 7 दिन मुझे वापस जाना था। अगर वहां तब मैं इंडिया आती तो एक दिन की सचिन के साथ ना बिता पाती। तो हमें वहाँ हंसी खुशी हमने दिन गुजारे वहाँ पे, बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे वहाँ पे। ये तो जुबेन से मिलने आई थी, इनके साथ वक्त गुजारने आई थी। ऐसा तब मेरे मन में भी नहीं था कि मैं इंडिया तब आऊंगी। ये तो बाद में हमने, जब हम जुदा हो रहे थे, तब हमने सोचा कि हम एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी पाएंगे। जी। अच्छा अब आते हैं मंदिर में। आपने कहा आप सिर्फ पशुपति मंदिर गई, ज्ञानेश्वरी मंदिर जो वहां पर है, यहाँ मंदिर वालों का दावा है कि केवल हिंदुओं की शादी होती है। तो सीमा हैदर की यहाँ पर शादी कैसे हुई? जी तो मैं हिंदू हूँ मैम। मैं अब से हिंदू नहीं हूँ, मैं पीछे 1 साल से हिंदू हूँ। मैं यहाँ की, आप लोग कह रहे हो सीमा हिंदू का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। मैं पाकिस्तान में भी मन से हिंदू थी, पर मैं खुल के नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहाँ अगर मैं हिंदू खुल के बताती कि मैं हिंदू धर्म में जा रही हूँ या मेरा मन है वहाँ पे, तो शायद मैं जिंदा भी ना बचती। तो मैं आपसे नहीं, पिछले कई 2 करवा चौथ में मना चुकी हूँ मैम। ऐसा नहीं कि मैं अब हिंदू बन रही हूँ या सचिन के लिए। मेरा मन भी हिंदू था फिर शुरू से लेकर। और इस बात को मैंने वहाँ कभी भी खुद को मुसलमान नहीं बताया था। हाँ, नेपाल में मैंने खुद को हिंदू ही बताया, और मैं हिंदू हूँ। ये सिर्फ मैं झूठ या नाटक नहीं कर रही, जो सच है मैं वो बता रही हूँ मैम। ये सचिन को भी पता है कि मैं इनके साथ, हम जब ये काली निकलती थी, मैं मन से देखा करती थी। वहाँ तो इतनी मनाई नहीं जाती। जब नवरात्रि आती थी तो मैं मन से इनके साथ मनाती थी। होली हो, कोई भी यहाँ का हो ना, मैं वहाँ पाकिस्तान में बैठ के, एक ही मेरी हिंदू दोस्त थी सोनम नाम की, उसके साथ, क्योंकि वहाँ हिंदू आराम से नहीं जी सकते, नहीं होली मना सकते, नहीं कुछ। और ये ऐसा, आप मेरी पुरानी वीडियो निकलवा लें, साल पुरानी भी देख लें, 2 साल पुरानी, तो मेरे मांग में सिंदूर होगा सचिन के नाम का। इसमें ये कोई शक नहीं, मेरी मोहब्बत की हद है। मैंने निकले दीन धर्म सब बदल दिया, देश भी छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, भूल गई हूँ मैं सब कुछ। मुझे इतना यहाँ से यहाँ प्यार मिला है मैम। पाकिस्तान में रहते हुए आप सिंदूर लगाती थी? जी बिल्कुल, साल पहले से लगाती थी मैम।
क्योंकि मैं उनको अपना पति मानती थी। तो आपके पति ने मैं उस करवा वक्त, चौथ मनाती थी, जो आपके इस बात की पाकिस्तान सचिन वाले गवाह पति है। हैं, जो पाकिस्तान वाले पति हैं, उन्होंने उस पर आपत्ति जाहिर नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनसे मेरे संबंध ही नहीं थे। वो मुझे छोड़ चुके थे, वो अब ढोंग कर रहे हैं, तो वो सब सच होगा मैम। हमारे रिश्ते पिछले मेरे पापा के मर जाने के बाद हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म और खराब हो चुका था। और कभी भी मैंने उनसे इतनी प्यार से वीडियो कॉल पे बात नहीं करी कि वो मुझे इतने प्यारे हैं, कभी भी नहीं। हम में सिर्फ लड़ाई और गाली गलौज चलती थी, कभी भी इज्जत नहीं करते थे मैम मेरी। अगर वो मेरी इज्जत करते तो आज यहाँ ना होती मैम। सृष्टि, बस सर्विस जिसके जरिए आप आई थी, वहां पर आपने अपनी पहचान क्या बनाई थी? पोखरा से जो आप लोग चले थे, बस पे आपने अपनी क्या पहचान बताई थी? बस में जो मेरी पहचान है, सचिन मेरे पति हैं, यही बताया था। और क्या, मैं एक भारतीय हूँ, जो कि मैं हूँ। भले आप लोग कुछ भी कहो, पर मैं खुद को इंडियन मानती हूँ। और बोले मैम, अपना नाम क्या लिखवाया था आपने? कुछ नाम तो लिखवाया होगा, बिना नाम के एंट्री के तो बस पे आपको चढ़ने नहीं दिया सीमा ही जाता मैम, था। सीमा, सिर्फ सीमा। सीमा ही लिखवाया था मैम मैंने अपना नाम, सीमा। जी मैम। आपका अपना भाई पाकिस्तान की सेना में काम करता है? मैम, मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ कि जब मेरी सचिन की बात होती थी तब वो एक मजदूर थे, तब वो एक मजदूरी पे काम किया करते थे और वो 12वीं तक पढ़े लिखे थे, उनको कोई काम ना मिल रहा था। तो अभी 2022 में मेरे पापा के डेथ होने के बाद, मतलब पहले 1-2 महीना पहले वो ड्यूटी में लगे थे। वो भी एक आम सिपाही हैं। वो उनकी कोई मतलब इतनी बड़ी औकात नहीं है, वो जितना शक्ति नजर देखा जाए। उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा थी, मैं अलग रहती थी उनसे। कहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है उनकी? बात में यही बात को खींचा जा रहा है। मैं मोहब्बत में आऊँ, यही सच्चाई है मैम। इसके अलावा जो बात आप करेंगे हमारे वकील से कीजिए। AP सिंह हमारे वकील हैं, आप उससे ज़्यादा उनसे बात कीजिएगा मैम। धन्यवाद मैम। All right, that was Seema Haider speaking with her husband Sachin. Of course, he barely uttered a word, but she has been quite open about her feelings. Now, how far is that true and credible is something for the agencies to decide. But she's been grilled by the anti-terror squad, by the Uttar Pradesh ATS for nearly 36 hours. Now, she's gone back to her home in Noida and she's living with her husband Sachin. There's huge police deployment right outside. But here's a quick breakdown that India Today brings to you on exactly the journey, the route she's taken, illegal one, to enter India only to be with her lover. Let's take a look. Seema Haider and Sachin Meena, the Pakistani woman and her Indian lover, are back at their residence in Greater Noida. They returned home on Friday after 36 hours of grilling by the UP anti-terrorism squad. ATS की जांच के शुरू होने के बाद से ही सीमा और सचिन गायब हो गए थे। कहां रखा गया था नहीं पता, उन्हें शायद पुलिस ने सेफ हाउस में रखा था। लेकिन अब जैसे ही सीमा और सचिन मीडिया के सामने आए हैं, अपनी तमाम बातें उन्होंने रखनी शुरू कर दी हैं। Seema Haider is on the intelligence agency's radar over her possible connections with the Pakistan Army and intelligence agency Inter-Services Intelligence. Heavy security is deployed outside the couple's residence. ATS की जांच के बाद सीमा और सचिन अपने घर पर वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस का सुरक्षा घेरा उनके चारों तरफ है। गली के बाहर और उनके घर के अंदर भी बड़ी संख्या में पुलिस लगातार बनी हुई है। Seema has started getting many visitors at home as the story of a Pakistani woman taking her 4 children to live with her Indian lover spreads. जासूस नहीं है और हमारे देश को कोई खतरा नहीं है, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। प्यार तो अंधा होता है, बॉर्डर ही क्या, कोई भी सीमा हो सब पार हो जाती है। Seema's family in Pakistan has appealed to her to return, but she is unfazed. Seema crossed over to India from Nepal in May to be with her Indian lover. She claims to have met while playing the online battlefield game PUBG. India Today is tracking the couple's trail in Nepal. A bus driver in Pokhara has claimed Seema faked her name while booking bus tickets from Nepal to India. Seema and Sachin have denied the allegations.
कुछ लोग जासूस भी कह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी सच है सामने आ जाएगा, आप चिंता मत करो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं सजा भुगतने को भी यही हूँ। Seema's lawyer has sent a plea to President Draupadi Murmu seeking Indian citizenship for the Pakistani woman. Seema is citing her marriage with Sachin Meena to ask for citizenship. Bureau Report, India Today. A PUBG love story across borders, having a relationship for years and finally crossing 4 nations to illegally enter India. It's shocking to even imagine that a lady in the name of love would go to great lengths, do everything illegal to be with a person that she loves. But is she really a genuine lover, or is this part of a larger plot? Is she a Pakistani spy indeed? India Today deciphers that story, the Seema Haider mystery. Let's have a look. From the virtual battlefields of PUBG, from Karachi in Pakistan to Rabupura in Greater Noida, via Kathmandu in Nepal. 27-year-old Seema Ghulam Haider's daring trek to marry her lover, 5 years younger, with her 4 children in tow. Now a subject of intense investigation. दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। तो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इसकी इस तरह की चीजें लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। Uttar Pradesh's anti-terror squad questioned the Pakistani woman sneaking into India via Nepal for 9 hours on Tuesday. Multiple agencies involved in cross-examining her claims. The Karachi-based Haider allegedly met Sachin Meena of Greater Noida a couple of years ago. Already married in 2014, her husband working in Saudi Arabia, she first met Meena in Nepal in March. Stayed with him in this hotel for a couple of days. Travelled to Nepal again in May. This time with her 4 children. She took a bus and crossed into India to reunite with her lover. Haider allegedly sold a property back in Karachi to fund her trip. But the investigating agencies aren't taking this story on its face value. Intriguing revelations tumble out of the ongoing probe. The Pakistani national holds not 1 but 2 passports. Number HZ0004421 and HZ0004422. Discrepancies found in her age and birth date. Pakistani authorities seem to have issued Seema Haider her national identity card in September 2022. These documents in general made available months after the birth. In her case, she got her Pakistani national identity less than a year ago. 2 passports in Pakistan. A bus from Pokhara to Uttar Pradesh to reach Greater Noida. Evading the keen eye of the Sashastra Seema Bal along the India-Nepal border. She carried all travel documents, but left one of the phones and a laptop she used in Pakistan behind. And when India Today spoke to her estranged husband, a laborer in Saudi Arabia, Ghulam Haider claimed Seema Haider's brother is a Pakistani border guard. ये जो सीमा हैदर, इसके भाई का नाम आसिफ है ना? जी। तो आसिफ कहाँ है अभी, किसमें कहाँ काम करते हैं? इधर ड्यूटी है इसका, कोई रेंजर्स में है इधर कराची में। क्या पाकिस्तान रेंजर्स में है, फौजी हैं? जी। और इनके जो चाचा है सीमा के, वो गुलाम अकबर, वो भी बड़े उधर इस्लामाबाद में, पता नहीं लाहौर में। कहाँ पे है? इस्लामाबाद। Seema Haider's speech, her language skills. A Pakistani woman from the Sindh province dressing up like a rural woman from India's Hindi heartland. Investigators are leaving nothing to chance. Agencies suspect that Pakistani handlers might have taken professional help to give Seema Haider a makeover in order for her to slip into India without detection.
Seema Haider's purported affidavit from 2014 in India Today's possession, the woman in this document accused her parents of greed. She testified that she left her home to live with Ghulam Haider because her parents wanted to marry her off with someone else against her wishes. And now she has left Ghulam Haider for Sachin Meena in India. Out on bail, but not off the hook. Seema Haider, an unconventional lover, or a Pakistani spy out to set up base in Uttar Pradesh? Over to the investigating agencies to get to the bottom of her saga. With Arvind Ojha, Bureau Report, India Today. Now, while Seema Haider claims she's left everything behind, the family that remains now in Pakistan, on one hand, the husband, Ghulam Haider, says that he wants his wife and the children back to Pakistan. And on the other, Seema Haider's family members say they don't want her. They have no connection with her anymore. They've disowned her. But here's Seema Haider's ex-father-in-law speaking exclusively to India Today. Have a listen. सीमा का पता अभी सुनता हूँ इंडिया चला गया। ये आपको कैसे पता चला कि इंडिया चली गई? वो मेरे लड़के ने बोला, मीडिया में आया, लेके में आया, उसने बताया तभी इंडिया में 4 बच्चे के साथ उधर चला गया। ये जो इंडिया मीडिया पे दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, ये वही आप सीमा हैदर है जो आपकी बहू है? जी जी, बहू है। ये उसके जो डांस के क्लिप भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस भी आ रही हैं, ये पहले भी करती थी या इंडिया में जाने के बाद किया? नहीं, इंडिया के जाने के बाद किया, पहले कभी नहीं किया। हमारा बलूची हिसाब में बिल्कुल नहीं किया, पहले बिल्कुल नहीं किया इधर। पहले इधर मोबाइल भी नहीं था, कराची गया तो फिर मेरे लड़के से बात करता था। इधर हमारे बलूची में कोई, अच्छा, मतलब यहाँ मोबाइल उसके पास नहीं था। जब वो कराची गया है तो वहाँ पे उस आपके बेटे ने, गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल लेकर दिया है? जी हाँ, लेकर दिया, फिर सऊदी चला गया इधर। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी? ये 2014 में। 2014 में शादी हुई थी। और यहाँ कितने अरसे तक रहे थे आप? इधर नहीं रहा सर, इधर बस 2-4 दिन बस इधर चक्कर में आया था, या न बस उधर कराची में खुश था। उसका सीमा का चाचा भी उधर था, भाई भी उधर था, मामा। अच्छा, तो शादी ब्याह में आते थे ये लोग आपके पास? नहीं आया, कभी भी नहीं आया। Now let me start with Allu Arjun, the superstar of the country, in fact, has now come back with his new film Pushpa 2, the much awaited, and he seems to have revealed a dialogue from the movie which has now broken the internet. Allu Arjun has leaked the dialogue from Pushpa 2, which is the sequel of the blockbuster film Pushpa, at an event giving quite a glimpse into this highly anticipated movie. While speaking at the success event of Anand Devarakonda's movie Baby, Arjun has said, Edivundedi okkatu rule, Adi Pushpa Gadi rule, which really translates to that there is only one rule. Wherever it is, there is only one rule, Pushpa's rule. The film also stars Rashmika Mandanna, Fahad Fasil in key roles, is all set to hit theatres later this year. The much anticipated movie, a first glimpse, Allu Arjun gives himself. సినిమా పేరు పుష్ప 2 ద రూల్. ఒక్కటే ముక్క ఉంటుంది. నేను మామూలుగా చెప్తానని కూడా నేను అనుకోలేదు, బట్ చెప్తున్నా. ఏడంతా జరిగేది ఒకటే రూల్ మీద జరుగుతుండదే, పుష్ప గాడి రూల్. All right, now we have a lot more coming in from the state of Andhra Pradesh. We see that the JSP chief, Pawan Kalyan, has landed himself in trouble. It seems like there's allegations of human trafficking and data theft against him. You have the Chief Minister of Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, now, who's attacked Pawan Kalyan. Let's take a quick look at what exactly the story is. While Jagan makes allegations of against Pawan Kalyan of having illicit relationships, really a low-blow attack there against Pawan Kalyan by the Chief Minister of Andhra Pradesh. It is lights, camera, trouble for the actor-turned-politician Pawan Kalyan. The Andhra Pradesh government has directed the public prosecutor to file a court complaint against the Janasena party president for making defamatory comments against ward and village volunteers employed by the state administration.
During his Varahi Yatra in Iluru on July 9, Pawan Kalyan had alleged that government volunteers were involved in the trafficking of women. He had accused the volunteers of collecting information about girls and widows and passing them on to anti-social elements. The legal crackdown on Pawan Kalyan was followed by personal attack on him by the Chief Minister Jagan Reddy. Reddy claimed Pawan Kalyan manipulates women into marrying him and has illicit relations. అమ్మాయిలను లోబర్చుకొని వారిని పెళ్లి చేసుకోవడం, 4 ఏళ్లు కాపురం చేయడం, మళ్ళీ వదిలేయడం. పైగా ఒకరితో వివాహ బంధంలో ఉంటూ ఉండగానే ఇంకొకరితో అక్రమ సంబంధం. The JSP chief reacted to the government order against him. He clarified it was the system he was blaming and not the volunteers for trafficking. ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడికి రాబోయే ముందు, స్టేజ్ ఎక్కబోయే ముందు మన ఆఫీస్కి ఏదో జీవో వచ్చింది. ఆ జీవో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వానికి కూడా చెప్తా ఉన్నాను. నేను ఒకసారి మాట చెప్పానంటే అన్ని రిస్కులు తీసుకొని చెప్తాను. మీరు నన్ను అరెస్ట్ చేసుకోండి, చిత్రవత్ చేసుకోండి. Pawan Kalyan is eyeing an electoral tie-up with the Telugu Desam and BJP. The tussle between Chief Minister Jagan Reddy and the Telugu actor, popularly known as the Power Star, could escalate ahead of the elections next year. Bureau Report, India Today. In the latest trouble for Karnataka Chief Minister Siddharamaiah, it seems like a man has now moved court with a petition accusing him of not fulfilling the 5 guarantees that he's made to the people of Karnataka based on which they've come to power. In fact, this petition here says that Siddharamaiah came to power itself by promising freebies to people of Karnataka, but he has now not delivered them, and due to that, he must be suspended as the MLA itself. His MLA's post must be taken away from him. The hearing on this petition now will be carried out by a single-member bench of the High Court, and it's been adjourned to the 28th of July. Let me cut across to Sagai Raj for more on that. Sagai, give us more on what exactly this petition intends to achieve, and are these allegations true? Has Siddharamaiah indeed not been able to deliver the 5 guarantees promised? The petition has been filed by a person called Shankar, who also hails from the same constituency where Siddharamaiah has won the elections from Varuna. And in fact, in this petition, he has alleged that Siddharamaiah has won the election promising to deliver on freebies, on the guarantees which was being made by Karnataka Congress. He said that as a minister, as an MLA, you have to promise on the development rather than promise on development. He has promised on freebies and has won the election. So he has requested Karnataka High Court to go ahead and disqualify him. The case has been adjourned to 28 to hear again. Thank you very much, Sagai, for joining us on that. It seems like these battles are never ending as the Congress assumes power in the state of Karnataka. Still a lot of pending work that needs to be done. Let's see how they cope up.